સમાચાર ન્યૂઝ હું છું એન્કર વેદા પટેલ. હવે છે અગત્યના સમાચાર. બોડેલી તાલુકાના પાણેજ ગામે ભુવાએ 5 વર્ષની બાળકીની બલીના નામે હત્યા કરવાના મામલે બોડેલી પોલીસે આરોપી ભુવાની ધરપકડ કરી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં હચમચાવી નાખે તેવી ઘટના સામે આવી છે, જ્યાં અંધશ્રદ્ધામાં બાળકીની બલી ચડાવી દેવાઈ છે. છોટાઉદેપુર જિલ્લાના બોડેલી તાલુકાના પાણેજ ગામની ઘટના છે, જ્યાં તાંત્રિક વિધિ કરવાને લઈને બાળકીની બલી ચડાવવામાં આવી છે. લાલુ હિંમત તડવી નામના ભુવાએ 5 વર્ષની બાળકીની બલીના નામે હત્યા કરી તમામ હદો પાર કરી છે. બાળકીને ઘરમાં લઈ જઈ ભુવાએ વિધિ કરી કુહાડીથી ગળું કાપી નાખ્યું હતું અને ત્યારબાદ નાના ભાઈને પણ બલી માટે લઈ જતા સમયે ગ્રામજનો જોઈ જતા ગ્રામજનોએ બાળકને બચાવી લઈ બનાવ અંગેની જાણ બોડેલી પોલીસને કરી હતી, જેની જાણ થતાં જ બોડેલી પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી બાળકીના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે ખસેડવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે આરોપી ભુવા લાલુ હિંમત તડવીની ધરપકડ કરી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. રિપોર્ટર વિરેન્દ્રસિંહ દેસાઈ સાથે અંજુમ ખત્રી, શિનોર સમાચાર ન્યૂઝ, બોડેલી. પાણેજની મારી છોરી રમતેલી ત્યાંથી ઉચકી લઈ જઈને પછી મય હુવરાઈ દીધી અને કોરી મારીને એની બલી ચરાવી દીધી. અને મારું નામ કોંતા રીતા દાડી. 8 વાગે. नमस्कार। बोडेली तालुका के पाडेज गांव में एक हत्या की घटना बनी है। घटना के अंदर जो पाडेज गांव में एक छोटी लड़की जिसकी उम्र 4 साल से थोड़ी अधिक थी, उसकी हत्या कर दी गई है। घटना के अंदर सुबह के समय पे ऐसा हुआ कि जो फरियाद इस घटना में जिस महिला ने फरियाद दी है, ज्योति बहन तड़वी, उन्होंने फरियाद में लिखा है कि वो सुबह के टाइम कपड़े धोने के लिए अपना एक छोटा बेटा और अपनी बेटी के साथ बाहर निकली घर के, तो उसी दरमियान उनका पड़ोसी लालाबाई तड़वी आके उनकी लड़की को खींच के अपने घर के अंदर लेके गया। और घर के अंदर ले जाने के बाद वहाँ पे उसके पास कुल्हाड़ी थी, इसलिए ज्योति बहन ने बूमा बूम बाढ़ के आसपास के लोगों को बुलाया, लेकिन व्यक्ति के हाथ में कुल्हाड़ी होने की वजह से किसी ने भी घर के अंदर प्रवेश नहीं किया। और जो 2-3 लोग जहाँ पे इकट्ठा हुए थे, उनके सामने ही लालाबाई तड़वी ने उस छोटी बालिका की कुल्हाड़ी के साथ हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उस आरोपी ने लड़की को अपने मंदिर के सामने, एक छोटा मंदिर बना हुआ है घर में, उसके पास लेके गया और जो उसके गले पर जो कुल्हाड़ी मारने की वजह से जो खून आया था, उस खून को लेके उनकी जो मंदिर की स्टेयरकेस थे उसके ऊपर उन्होंने उस खून को चढ़ाया। तो इस तरह की फरियाद ज्योति बहन ने दी है और उसके फरियाद के चलते हमने आरोपी को हिरासत में भी ले लिया है, पूछताछ जारी है। और अभी प्राइमरली ये मामला नरबली का लग रहा है, क्योंकि उसने जो खून लेके मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ाया है, इस वजह से हम उस डायरेक्शन में तपास कर रहे हैं और किसी का इन्वॉल्वमेंट अभी तक सामने नहीं आया है। और जैसे ही पुलिस को और जानकारी मिलती है कि इसका कोई और कारण है या नहीं है, हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी ये मामला नरबली का लग रहा है और जो व्यक्ति है आरोपी, वो थोड़ा विकृत प्रकृति का लग रहा है, इस वजह से ऐसा हो सकता है कि उसने ये गुनाह किया है। तांत्रिक विधि किया हो गया।